इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स। डियर टीचर्स, आज का लेक्चर था हमारा लेटर के, उसके रिगार्डिंग हमने एक स्टोरी सुनी और लेटर के पेजेस को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे कि लेटर के से रिलेटेड हमारी बुक पे क्या चीजें गिवन है। Dear teachers, there is a teacher's note over here. Do the exercises in the workbook pages from 49 to 52. So नंबर के साथ हमने रिलेट किए हैं कुछ वर्कबुक पेजेस और वो हैं इन 4 पेजेस पे 49 से 52 तक। ये आपने बच्चों से करवाने हैं। And then let's discuss these interesting and exciting activities. Students are little explorers. You are going to show a kiwi fruit to them. Cut it open and talk about its colors and seeds. क्योंकि कीवी फ्रूट एक रेयर फ्रूट है एंड वो बच्चों ने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होता कॉमनली, तो आपने बच्चों के सामने कीवी फ्रूट को लेके आना है, उसको कट करना है, टॉक अबाउट इट्स टेस्ट and appearance. Then they are little innovators. Show a picture of kettle and explain that it is used to boil water. आपने उनको केटल की पिक्चर दिखानी है, बल्कि आप रियल केटल भी दिखा सकती हैं उनको, और आपने बताना है that it is used to boil water or any other thing in that. Moving on with little builders. Guide and help the learners to make a kettle by using a Play-Doh. Now they are going to make their own kettle using Play-Doh. An example picture is over here. Then little designers encourage and guide the learners to color the sketch of kangaroo and the letter K at the top of this page over here. And then they are little thinkers. Provide the learners with a set of keys and ask them to count the keys aloud, because key also has the starting sound of K.